Namaste everyone. How are you all? I'm Shruti Tiwari from Top Rankers, your own VARC trainer for your preparation of CAT. Today I'm here with a small session, basically an outline session of WAT, that is written ability test. Largely it is just to kickstart the preparation. I know we have to do it thoroughly for days to come, and we'll have good sessions on that practice, writing together. But this is just to kickstart the preparation. All right. So let's do it. So what's the format of this test? Basically, you'll this is no at the second round of your selection process, just before your PI, that is personal interview or personal interaction. Just before that, they give you 15 to 20 or maybe 25 minutes, and in that you have to write on a topic. Uh, Topic could range from anything from current affairs to abstract topics. We'll discuss that, and they'll give you an open-ended topic, and you are supposed to write probably 200 or 220 at max 250 words. This is maximum you could write because they're just giving you a little time. uh, this time depends on which IM calls you have, or probably any other B school you have. Different B schools have different time limits, ranging from 15 to 25 minutes. At times, even a few IMs are there which give you 30 minutes. So, depending on B school, you have this time. And basically, what they are assessing, or what they are actually they want to check, is your flow of idea, how you present your idea, how sensibly, or what is the coherence in your uh, presentation. So coherence. All right. So basically, they are not looking for any kind of impressive vocabulary or any kind of impressive, sentences, structuring. They are not expecting authors and journalists to join their B schools. They just want good students who are good managers. So basically, your presentation. So it should be simple and clear. All right. The reader should be able to peep in your brain to understand your thought. That's the only purpose. Now, there's other confusion which is there, that is analytical writing test, and difference between analytical writing test and VAT, or writing ability test. This is largely in IIM Ahmedabad. And this is not very much similar to GRE GMAT analytical writing test or SAT writing test. This is basically a case study, a very short case study IIM Ahmedabad gives of maybe 2 to 3 sentences. And largely what they're expecting is how well you are able to analyze the argument of the author's argument. So that's the purpose. All right. And here in WAT, basically all other B schools are giving you this written ability test, wherein they give you a topic. Case studies generally come only in few IMs, or maybe auxiliarized. Otherwise, they give you topics which are current and which are very interesting and open-ended topics, and you are supposed to give your opinion or maybe your thoughts on what's your opinion on that particular. You take a stand on that, or maybe whether you agree or disagree. So it's kind of extremely topic. It's very not very difficult, or you know, you can very well handle that. All right. So what are skills are required, to ace this written ability test? What can impress the reader or the person who will grade your essay? The first thing is idea generation. So idea generation with basically is brainstorming. All right, you make a rough draft or a roadmap of uh, your ideas. So that is idea generation, and this should not take more than 2 minutes. You have to give 1 to 2 minutes to, to generate ideas on that particular topic. I'll tell you how you can do it very quickly.
All right. And then there is this structure. You already know how to write it. You have this intro, body, and then conclusion. So this is structure which you have seen it, from your school days. और तीसरा है presentation. Presentation कैसे करना है? How well planned your ऐसे इज अगर वो बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ नहीं है, आइडियाज ऐसे ही रैम्बल कर रहे हैं इधर उधर, then your essay will not be able to impress anyone. So this is presentation, how to structure your essay, and that's exactly what I'll be telling you today. सबसे पहले आ जाते हैं आइडिया जनरेशन पे. ये कुछ कीवर्ड्स है या कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बोल सकते हो आप, शॉर्ट ट्रिक्स बोल सकते हो, फॉर्मूला बोल सकते हो, विच विल क्विकली गिव यू ideas on any topic which is presented. So this P stands for political, E stands for economical, S stands for social, T stands for technological, logical. Okay. Then E again, it is environmental. And L is legal, any laws pertaining to that particular topic. For example, they give you a topic like women are better managers than men, or women are better multitaskers than men. So now you can very quickly take examples from politics. You can compare whether you agree or whether you disagree. Anything you can. But you can take examples from the political landscape of India or probably the world, or from ancient to the modern, world. So you can take examples whether women were able to do multitasking in politics or no. Recent current usme Nirmala Sitharaman. So she has taken a lot of ministries and she has, performed very well. So you can compare with Nitin Gadkari, or probably you can compare with Ajit Doval, not very much into politics. He had been a diplomat, but then otherwise also. Or you could take Manohar Parikar. So you can compare them that, men and women are equally multitaskers. There is nothing like, or you could take example from society. Probably, women are doing domestic chores, they are doing office work, they are also bearing the child and upbringing of the child. So in the ancient societies, it was division of labor, but now it is no more like that. Division of labor. And now it is like equal share of responsibilities. Men and women both are equally sharing the responsibility because both are earning. And now the lifestyle is not that hard. So you might not agree with this statement that women are more multitasker or maybe more, better managers and something like that. From economical point of view, you can take examples of MNCs, which are, giving preference to women, or which are, progressing because more women they are employing probably from IT world. You can take a technological example now because of AI and the growth of technology everywhere. Probably men and women both are equally good. All right, it depends on how much skills they have developed. Legal, probably you can take examples, or laws you could talk about, how women are given preference in all the policies by the government. Now, you could take even, this idea that you can always compare India and international. So you can take examples of, things which are happening in India, the current happenings which are there in India and the world. SCAR is largely for abstract topics. Abstract topics. Abstract topics like, if I say, um, mm, all right. Uh, uh, Square peg in a round hole. Or you could have black is the
new orange. So these kind of abstract topics when you have, when you are not able to understand very clearly what the, topic is all about, then you can use this technique, which is substitute. S stands for substitute. So you can substitute this topic by your own, interpretation of it. Or you could combine, say, whatever example is coming to your mind, which is relevant to this, you could combine those, points, and you could write on that. A stands for maybe alternative, and R stands for rearrangement. Or you could relate it to something else. Then you could probably write. So, for example, this is square peg in round hole. So you are able to understand that this is square, which is not very much, in harmony with round. एक round hole में square peg लगाना मतलब क्या है? This is mismatch. All right. So very quickly you can relate it with this particular way of generating ideas. That how could you substitute this by saying that, okay, there are many things which are there, which could be square peg and round hole. Probably a foreigner coming to India and getting married in India, he or she will not be able to gel with the customs and traditions of India like the Indians do in America. So these are kind of things which you can do. Or probably you could take examples from, economy. You can say that there are certain policies, or there are certain companies, they come up with policies which are mismatched with the current social scenario of India. So this is square peg and round hole. All right. So anything which is a mismatch, you could write on that. Similarly, you can have this black is the new orange. Now, anything, any kind of idea you could have generated with this rearrangement, or relating this to something unique, or something which comes to your mind. So probably black you could associate with depression, or probably you could relate black with some kind of corruption, or and orange is basically related to something which is bright, and this is black is related to something which is dark. So you could actually rearrange and combine these, keywords, and then you could make out some sense. For example, black is new orange. So black could be related to dark, that is night, and orange is related to bright. So you could say that in the present scenario, when people are more involved into social media and late nights are very frequent, black is the new orange. That means early mornings, people don't get up. They are generally sleeping. They generally consider it to be dark. 4 o'clock, 5 o'clock, earlier it used to be dawn, that is orange. But now it is supposed to be dark. That is, people generally consider them to be sleep hours. All right. Most of the people consider black to be associated with evil, or probably corruption, or probably violence. And orange you could relate to, something like Kesariya, जैसे भगवा, so you could relate that because of BJP, or because of, RSS, or probably because of certain parties, religion has become the new black. That means that is letting towards corruption or violence, something like that. So you could actually, generate ideas with them. We'll do that together in the sessions. Then is structuring, that is prep. Prep stands for point, reason, example, and then concluding point. So this is, very simple and मतलब time tested ये formula है to structure your essay. That is, you should start with a point in your mind. You should give reasons why you agree or disagree with that. You could relate or illustrate it with example. This substantiates your point.
एंड देन यू कैन कंक्लूड इट. सो इससे क्या होता है, रीडर को बहुत क्लियर आपका फ्लो समझ में आने लग जाता है. So with introduction, body and conclusion, basically you could relate it to point. अच्छा, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन में ये ध्यान रखना है कि बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं चाहिए. सो योर इंट्रोडक्शन शुड बी ऑफ 2 to 3, आई एम सॉरी, नॉट पैराग्राफ, लाइन्स, sentences. 2 to 3 sentences are good. Body should have 2 paragraphs, not more than that, otherwise it will be too lengthy. तो 2 पॉइंट्स बहुत है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2. हर एक पॉइंट के आप करीब करीब 4 से 5 sentences लिख दो. That is more than sufficient. And then comes to conclusion, which is more than like 2 to 3 sentences. So that's enough. एक सिंपल स्ट्रक्चर रखना है. हमेशा ध्यान रखो आपका स्ट्रक्चर जो है वो जितना सिंपल होगा और जितना फिक्स करते चले जाओगे उतना उस दिन आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. ज्यादा इनोवेशन दिखाओगे तो कंफ्यूज होगे, अननेसेसरी आप अनफिनिश्ड ऐसे सबमिट कर दोगे. सो यू शुड कीप इट वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. Now these are the topics, कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं. तो लार्जली ये 4 कैटेगरी मुझे दिमाग में आती है. पहला तो करंट इश्यूज, जो मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होंगे उसके टॉपिक्स आ सकते हैं. जैसे अभी फिलहाल में यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर हुआ. सो दीज आर सर्टन टॉपिक्स और सर्टन न्यूज हेडलाइंस. सो यू कैन एक्चुअली get topics on that. फिर केस स्टडीज, दे कुड गिव यू स्मॉल केस स्टडीज, है ना, बहुत बड़ी बड़ी केस स्टडीज नहीं है. वो केस स्टडीज आपको बी स्कूल में सिखाई जाएंगी, अभी नहीं लेंगे. सो स्मॉल केस स्टडीज वेर इन वो डिसीजन मेकिंग को टेस्ट करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स मैंने आपको भी बता ही दिए. सो दे आर मोर फिलोसफिकल इन नेचर. तो बेसिकली और फिर ओपिनियन बेस्ड टॉपिक्स, तो ये ओपन एंडेड ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं, एक्सटेम्परी वाले, ठीक है, जिसमें कि यू अग्री और डिसअग्री वाला पॉइंट आता है. जनरली सोशल और इस तरह के टॉपिक्स रहते हैं जिसमें कि यू आर जस्ट आस्क्ड टू गिव योर थॉट्स और ओपिनियंस ऑन दैट. These are some good useful phrases and conjunctions which will help you combine sentences or combine thoughts or give a very good flow to your essay. जैसे तुम जो इंट्रोडक्शन है उसमें लिख सकते हो टू स्टार्ट विथ, रादर देन सेइंग इन माय ओपिनियन और आई वांट टू से. ये बहुत गलत तरीका है स्टार्ट करने का किसी भी ऐसे को. रादर देन दैट यू कुड स्टार्ट सेइंग टू स्टार्ट विथ और firstly, secondly, finally. तो firstly in one paragraph, secondly in second paragraph and finally in the conclusion. तो उससे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आ जाता है और रीडर को समझ में आता है कि आपका थॉट फ्लो जो है वो कैसे जा रहा है. अगर आप कोई एडिशनल पॉइंट डालना चाहते हो, जैसे आप कोई एग्जांपल दे रहे हो और उसमें कोई एडिशनल पॉइंट डालना चाहते हो, तो यू कैन यूज टू ऐड टू दिस पॉइंट, मोर ओवर, इन एडिशन टू, एडिशनली. नो, अगर कोई डिसएग्रीमेंट है या किसी चीज का काउंटर आप लिखना चाहते हो, जैसे आपने कोई एग्जांपल दिया, आपने कोई पॉइंट एस्टैब्लिश किया कि ओके दिस इज समथिंग व्हाट यू थिंक, and then you want to counter to that, so then you can say in contrast to, however, despite, on one hand, on the other hand. है ना, ये कुछ अच्छे phrases हैं जो sentences को combine करने में बहुत help करते हैं. सिमिलरली जब आप एग्जाम्पल लिखना चाह रहे हो किसी चीज का, तो यू कैन से फॉर इंस्टेंस एंड देन यू कैन राइट एन एग्जाम्पल, इन फैक्ट, एंड देन यू कैन गिव द स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबली सम रेफरेंस स्पेसिफिकली. अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिना और एक पर्टिकुलर किसी फील्ड से रिलेटेड कुछ देना चाहते हो तो आप स्पेसिफिकली यूज कर सकते हो. फिर एन एप्ट इलस्ट्रेशन टू दिस वुड बी, या रेफरेंस वुड बी. कॉज एंड इफेक्ट, अगेन रीजन आप जो दे रहे हो उसका क्या आप कंक्लूजन निकाल रहे हो, उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो. एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस, दस, टू कंक्लूड, फॉर दिस रीजन, देयरफॉर. जब आप लास्ट में कंक्लूजन लिख रहे हो तो यू कैन ऑलवेज यूज टू सम अप इन कंक्लूजन, फाइनली, इन अदर वर्ड्स. ये बहुत अच्छा तरीका है अपने सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने का. अपने पूरे ऐसे के हर सेंटेंस को आप बहुत प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग दे सकते हो अगर आप इनको यूज करते हो. बट देन दैट वुड रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस. नाउ लास्ट फ्यू स्लाइड्स टू कंक्लूड दिस सेशन. सबसे पहली चीज, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए. देखो, मैं इतने साल से आपके एसेज चेक करती आ रही हूँ, तो
मेरी बात मानो, इन चीजों को अवॉइड करना सीखो। सबसे पहली चीज, राइटिंग टिल द एंड। बहुत सारे स्टूडेंट्स आखिरी तक स्क्रिबल करते रहते हैं, ठीक है, दैट इज रियली अ बैड प्लान। क्यों? क्योंकि आपको वो एक अनफिनिश्ड जो ड्राफ्ट है ना, आपका रफ ड्राफ्ट, वो सबमिट करना पड़ेगा, एंड ट्रस्ट मी, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव गुड इंप्रेशन। ओके? बेस्ट ऑफ ऑथर्स दुनिया में जो है ना, उनको भी एडिटर चाहिए होता है प्रूफ रीड करने के लिए, आपको ये पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी आदत को आपको सुधारना पड़ेगा कि आपको आखिरी तक लिखते नहीं रहना। यू शुड स्पेयर एटलीस्ट 1 मिनट, 1 मिनट ही देना है, और कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है? आप ये मत सोचो कि मेरे पास टाइम तो है नहीं, मैं कैसे करूँ, नहीं, 1 मिनट आखिरी का छोड़ दो अपने पेन को अब, ठीक है? और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ दैट यू शुड स्ट्रक्चर। अगर आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होगा और सिंपल होगा, सिंपल स्ट्रक्चर, तो आपको ये वाला टाइम बहुत अच्छे से मिल जाएगा प्रूफ रीडिंग करने के लिए, ठीक है? सो यू शुड अवॉइड राइटिंग टिल एंड। राइटिंग विदाउट अ प्लान, मैंने आपको आइडिया जनरेट करने के बहुत सारे तरीके बताए, और भी तरीके मैं बताऊंगी आगे आने वाले सेशंस में, ठीक है? बट यू शुड ऑलवेज हैव अ रोड मैप, ठीक है? आपके ब्रेन को पूरा सही मालूम होना चाहिए कि मेरा स्ट्रक्चर कैसा जाएगा और मेरा फ्लो ऑफ आइडिया कैसा जाएगा, अदरवाइज वो रीडर को भी नहीं समझ में आएगा। योर ऐसे विल बी meandering here and there and the reader will not be able to follow you. रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, बाप रे, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है। अगर आपने प्रूफ रीडिंग नहीं की तो बिलीव मी, आपके ऐसे को देखकर आप खुद हंसोगे। द वर्ड बहुत ज्यादा रिपीट होता है, prepositions बहुत सारे ऐसे हैं, ऑफ, ऑन, ये बच्चे जबरदस्ती रिपीट करते चले जाते हैं। फिर एक बहुत कॉमन रिपीटेशन होता है टू, और ये टू वाला, इसमें कंफ्यूजन भी बहुत होता है और ये रिपीटेशन भी बहुत होता है। उसके अलावा हैज, हैव और हैड अननेसेसरी हम यूज करते हैं, या फिर कोई सा वर्ड है या कोई वोकैबलरी का कुछ है, तो आप उसको अननेसेसरी रिपीट किए जा रहे हो, वही का वही, वही का वही। कई बार आप रिपीटेशन ऑफ आइडिया भी कर देते हो, आपने एक एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया है, आप उसी पॉइंट को फिर से दोहराने लग जाते हो, तो ये लिखते वक्त ध्यान नहीं रहता। इट्स ओनली व्हेन यू आर proofreading that you will be able to understand. Use of flowery language. देखो, एग्जाम के जो कन्वेनर्स हैं उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि हमको आपकी फ्लावरी लैंग्वेज बिल्कुल इम्प्रेस नहीं करती, तो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू यूज दोज हाई साउंडिंग वर्ड्स। यू शुड नॉट क्रैम वर्ड्स और डिक्शनरीज फॉर WAT. They want you to write in simple language, but it should be sensible. They are not expecting journalists or authors to get admission in their B schools. They are expecting good management students. All right? तो आपको अपनी बात को रखना आना चाहिए, that's the only expectation. So you should avoid that, क्योंकि इससे बहुत confusion create होता है। idioms और phrases use करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। फिगर्स ऑफ स्पीच अगर आपको आता है, आपको समझ में आता है मेटाफर सिमिली कैसे यूज करना है, बिल्कुल यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आधा अधूरा ज्ञान है, यू डोंट नो एनीथिंग, तो हाफ बेक नॉलेज जो होता है ना, वो हमेशा खतरनाक होता है, एंड दिस इज गोइंग टू कंफ्यूज द रीडर, सो अवॉइड दैट। व्हाट यू शुड एंश्योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब ऑब्वियसली टॉपिक्स लेना है, उनके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। यू शुड राइट एटलीस्ट 15-20 sentences एवरी डे, हार्डली टेक 15 to 20 minutes, और उसको चेक भी करना है। क्रॉस चेक भी करवा सकते हो, और खुद भी चेक कर सकते हो, अपने फ्रेंड से भी चेक करवा सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज मैंडेटरी। इफ यू रियली वांट टू ace and you want to score good, you want to impress the reader, then you should ensure that you practice at least 15 to 20 minutes writing every day. स्पेसिफिकली जो करंट टॉपिक्स आएंगे वो, या पिछले साल के जो टॉपिक्स पूछे हुए वो, तो यू दैट विल हेल्प यू। फिर अपडेट योर करंट अफेयर्स ऑब्वियसली बाय न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स पढ़ना है, उसके अलावा न्यूज चैनल्स को देखना है, न्यूज क्लिपिंग्स, जनरली BBC, ओ BBC, ठीक है? उसके अलावा आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हो टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ पीपल राइट देयर थॉट्स। और उसके अलावा प्रूफ रीडिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रूफ रीडिंग। न्यूज जितने मीडिया हाउसेस हैं उसमें सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस कैबिन किसका होता है? एडिटर का। और वो क्यों होता है?
क्योंकि अच्छे अच्छे बड़े बड़े एडिटर सॉरी ऑथर्स भी लिखते वक्त एरर्स कर देते हैं, टाइप करते वक्त एरर्स कर देते हैं. सो एडिटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू शुड स्पेयर एटलीस्ट लास्ट का 1-1.5 मिनट टू प्रूफ रीड वट एवर यू हैव रिटन. अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ होगा, तो आप तुरंत उसको करेक्शन कर दोगे. कहीं कोई वर्ड आपने रिपीट किया होगा तो उसको कट कर दोगे. इट इज गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है. सो दिस इज समथिंग विच यू शुड ensure. So that's all for today. We'll meet again with some live sessions on how to write essays. ZAT के essays कैसे लिखने हैं, उसके अलावा WAT के essays कैसे लिखने हैं, इसके अलग अलग मेरे सेशंस मैं लेकर आऊंगी और हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे. द PYQs भी लेंगे, उसके जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स रहे हैं ZAT के और WAT के, और उनका डिटेल डिस्कशन भी करेंगे. ठीक है. टिल देन you should prepare well. All right. Take very good care of yourselves. Namaste.